इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ईएम वेव्स चैप्टर का थ्योरेटिकल टॉपिक, लास्ट टॉपिक है इस ईयर के सिलेबस के लिए। अब व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है? एक बैंड। हमको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पता है वो हमको एक विजिबल लाइट पता है, विजिबल लाइट, ठीक है। तो दिस विजिबल लाइट फॉल्स अंडर अ पर्टिकुलर बैंडविड्थ of wavelength of electromagnetic waves, and it is a very short part of that bandwidth, complete range of wavelengths which the electromagnetic spectrum is called। उसमें का एक बहुत छोटा सा पार्ट है विजिबल लाइट। जितनी लाइट के लिए हमारा आंख सेंसिटिव है उसको हम विजिबल रेंज बोलते हैं। वो रेंज कितना है दैट वी हैव टू सी, ठीक है। व्हाट इज द रेंज ऑफ द वेवलेंथ which is visible to our eyes? But apart from this visible range also, there are at least broadly classified 5 varieties of wavelengths which are categorized under different names according to their use wavelength frequency। That complete arrangement of we can say the wave electromagnetic waves in the increasing or decreasing order of the wavelength of frequency is called as electromagnetic spectrum। spectrum मतलब पूरा एक सीरीज, ठीक है। अब हर वेव की अलग यूज है, हर टाइप की वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की यूज अलग है, उसकी वेवलेंथ और रेंज डिफरेंट है, and that has to be memorized because conceptual questions can be coming from any part of it, or we can say direct questions also may come कि भाई इसका इतना वेवलेंथ है है ना, यूज कहां पर होता है, एक्सेट्रा। okay, so let us briefly write down the definition for electromagnetic spectrum। okay, what do you mean by electromagnetic spectrum? Write down: the orderly distribution of electromagnetic waves, the orderly, orderly, orderly distribution of electromagnetic waves in accordance with their wavelength or frequency, in accordance with their wavelength or frequency, in accordance with their wavelength or frequency, into distinct groups, into distinct means separate groups, into distinct groups having widely different properties, only, having widely different properties is called electromagnetic spectrum, is called electromagnetic spectrum। Now let us see what are the major parts of electromagnetic spectrum and what is the range of frequency as well as wavelength for their corresponding name, ठीक है। तो वन बाय वन नेम वाइज हम लोग इसके नीचे ही लिख पाएंगे। Second, here you go on your screen, see the orderly distribution of waves in the increasing order of wavelength and decreasing order of frequency is given in the text in front of you। The short we can say the shortest wave, or we can say the wave having shortest wavelength is called gamma rays, that is the first part of the wavelength। After then comes the X rays, then the UV rays, after that comes the visible part of the spectrum, which is the visible part of the spectrum which is visible to our eyes, starting from violet to red, having the increasing part over there। So what is the increasing order of wavelength? Increasing wavelength देखो यहाँ पर -10⁻14 मीटर से कहाँ तक जा रहा है देख लो, 10⁻7, 10⁻7, and we know that the visible part, the violet is having the least wavelength and red is having the longest wavelength। What is the range of red light which is visible to you? What is the range of red light which is visible to you? It is from 650 nanometers to 700 nanometers। Nanometers means 10⁻⁻6 and above।
10 का पावर -6 and above. Okay, so 650 nanometers to 700 nanometers. Okay, now जैसे ही हम ऊपर जाते हैं, as we go up above the visible range, we have infrared waves, which are the carriers of heat with the light. ठीक है, carriers of heat. Next, larger wavelength, even larger wavelengths are of the microwaves. Microwaves are having even larger wavelength, which are having a range. देखो यहाँ पर आपको range दिखाई देगा. They are having a range from frequency के terms में नहीं, हम wavelength के terms में देखेंगे. From 10 to the power -3 and above to 10 to the power -1. काफी बड़े हैं as compared to the wavelengths of the gamma rays over. Then comes the short radio waves and then comes the AM waves. ठीक है, ये जो short radio waves है इनका use हम लोग देखेंगे. Radio waves FM बोलते हैं. FM, you know FM, which is used for the broadcast of radio signals during within a city or a state. ठीक है, बहुत ज्यादा long distance नहीं, all over India के लिए नहीं है, all over world के लिए नहीं है, but shorter part or smaller area to be covered, the short radio waves are used. तो AM का जो FM रेडियो होता है उनका ब्रॉडकास्ट इसी पे होता है. टेलीविजन सिग्नल्स जो आपके D2H कनेक्शन वगैरह होते हैं वो इसी पर होते हैं. नेक्स्ट AM रेडियो वेव्स. AM रेडियो वेव्स किसके अंदर आता है भाई? विविध भारती, ऑल इंडिया रेडियो, ऑल दीज आर ब्रॉडकास्टेड ओवर AM रेडियो वेव्स. इसके लिए एक छोटा सा रेंज दिया हुआ है देखो, जिसके ऊपर ये लोग अपना ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं. एक सिंगल वेवलेंथ आपको अलॉट कर दी जाती है और बेसिकली इन लोग फ्रीक्वेंसी पर बात करते हैं. ठीक है, फ्रीक्वेंसी इतनी अलॉट कर दी जाती है, इस रेंज के अंदर आप अपना ब्रॉडकास्ट चला सकते हो. अब इसके नीचे जो ये लॉन्गर रेडियो वेव्स आ रही है ना, ये लॉन्गर रेडियो वेव्स, ये रेंज की फ्रीक्वेंसी को अपने घर पे ट्यून करना मना है. आप जरूर डिवाइस बना सकते हो टू ट्यून दिस लॉन्गर रेडियो वेव्स, but it is prohibited in government. Why? Because this range of wavelength is used for military communication. Military communication in longer wavelengths पर होता है और ज्यादा डिस्टेंस को कम्युनिकेट करने के लिए. इसको अगर ट्यून करके कोई आदमी वो कर रहा है, क्या बोल सकते हैं हम लोग, ट्यून इन करके रिसीव कर रहा है, he can be charged against the law. Okay, so this is all where you have seen what are the major parts of the electromagnetic spectrum. How many varieties you can see? Basically 1 2 3 4 5 6 7 रेडियो वेव्स में दो वैरायटी आ जाएगी, shorter radio waves and longer radio waves. Is that okay? You need to memorize in what range do they fall. ठीक है, तो या तो वेवलेंथ को आप रेफरेंस मान लो, उस तरह से याद कर लो, या फिर फ्रीक्वेंसी, रिड्यूसिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी. देखो कितना हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ पर अगर हम देखते हैं, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ गामा रेज 10 का पावर 23. रेंज स्टार्ट फ्रॉम गामा रेज 10 का पावर 19 to 10 का पावर 23 over there. ओके, नेक्स्ट विजिबल रेंज 10 to the power 15 से 10 to the power 14, बस इतना ही जा रहा है. नेक्स्ट इंफ्रारेड रेज 10 to the power 13 से लेकर के 10 का पावर 12. दैट इज इन व्हाट? हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी per second. Or longer radio waves. This was a pictorial representation where you can see the major components of electromagnetic spectrum. इसी सीक्वेंस में याद करना, गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो and radio waves. Okay, now the first wave, infrared wave, that is the part of the electromagnetic spectrum which we are starting in the reducing order of the wavelength and increasing order of the frequency. So the shortest frequency, not shortest, we can say smallest frequency is for the waves which are having the longest wavelength radio waves. These are EM waves of longest wavelength and minimum frequency. वेवलेंथ रेंज कहां से कहां? 600 meters to 0.1 meters. 600 meters, quite large over there. frequency is the smallest, 500 kilohertz से लेकर के 1000 megahertz तक रेंज आएगा.
इसमें क्या इंपॉर्टेंट है देखो, व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनका याद रखना है आपको, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, और डिस्कवर्ड मे बी आस्क्ड 1 मार्क एंड समथिंग, एंड यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज होता है, एंड रेडियो एस्ट्रोनॉमी, रेडियो एस्ट्रोनॉमी मींस रिसीविंग सिग्नल्स फ्रॉम आउटर स्पेस। इतना लार्ज, देखो जितना बड़ा वेवलेंथ होगा उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाता है। रेड लाइट से ही याद कर लो, लार्जेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ये रेडियो वेव सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाले होते हैं। तो ये आउटर स्पेस से कोई सिग्नल अगर हमको रिसीव करना है, so can be used by detecting radio waves. Okay. Now moving further, ये यहाँ पर दिया हुआ देखो, मीडियम वेव्स दिया हुआ, इसको भी बाइफरकेट करके दिया हुआ। मीडियम वेव्स एएम बैंड, शॉर्टर वेव्स एएम बैंड, एफएम ब्रॉडकास्ट 88 से 108 मेगाहर्ट्ज तक होता है। जैसे हम बोलते हैं ना वो जैसे हम बोलते हैं 98.3 रेडियो मिर्ची मिडफॉर्ड, तो देखो कहाँ पर आ रहा है, 88 से लेके 108, तो 98.3 इसी में आता है। तो ये एफएम ब्रॉडकास्ट में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, द नेक्स्ट वेव इज माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ अब थोड़ी छोटी हो जाती है और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। दे आर ईएम वेव्स हैविंग वेवलेंथ नेक्स्ट स्मॉलर देन रेडियो वेव्स। व्हाट आर इट्स वेवलेंथ रेंज ओवर देयर, वेवलेंथ रेंज आपको मिलेगा 0.3 मीटर से 10 का पावर -3, काफी छोटे हो गए हैं। फ्रीक्वेंसी रेंज होता है 10 का पावर 9 टू 10 का पावर 12 हर्ट्ज, बढ़ गए हैं। और सोर्सेस वो तो हो गया। नेक्स्ट प्रॉब, इसको भी मैक्रो ने डिस्कवर किया था। यूज देखते हैं यहाँ पर, यूज, व्हाट आर द यूज ऑफ दिस वेव्स। रेडार सिस्टम, एयरक्राफ्ट नेविगेशन, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन सिस्टम वाया जियोस्टेशनरी सैटेलाइट एंड माइक्रोवेव्स। ओके, माइक्रोवेव ओवंस, ओ ऑब्वियसली हम लोग माइक्रोवेव को इसीलिए बोलते हैं कि ये हीट कैरी करते हैं यहाँ पर, है ना, हीट कैरी करते हैं, और दे आर यूज्ड फॉर कुकिंग पर्पसेस आल्सो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द अदर पर्पस। Okay, is infrared waves. These radiations lie close to the low frequency, long wavelength of the visible spectrum. Infrared waves produce heating effect. ये बेसिकली जब हम रेडिएशन के थ्रू लाइट हीट ट्रांसफर करता है तो इंफ्रारेड वेव्स के कारण कर पाता है, ठीक है। तो इंफ्रारेड वेव प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, सो दे आर आल्सो नोन एज हीट वेव्स, थर्मल रेडिएशंस, ठीक है। कहाँ यूज होता है भाई, देखते हैं। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की रेंज देख लो, नोट कर लो। वेवलेंथ इज इन बिटवीन 5 × 10 का पावर -3 से लेकर के 10 का पावर -6 मीटर्स। वेवलेंथ क्या हो जा रहा है, अब छोटा होते चला जा रहा है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। 10 का पावर 11 हर्ट्ज से 5 × 10 का पावर 14 हर्ट्ज, काफी बड़ा हो गया। सोर्स, हॉट बॉडीज, ब्लैक बॉडी रेडिएशन is seen because of these waves being emitted out from the body. जो भी आपका हीट अबंडेंट मटेरियल होता है, जैसे कि हम फायर की बात करते हैं, तो द हीट, द सोर्स ऑफ लाइट एंड द सोलर रेडिएशंस व्हिच आर कमिंग टू अर्थ आर ऑल in the majorly in the range of infrared waves which are carrying heat as well as light with them, ठीक है। कौन डिस्कवर किया था, विलियम हर्शल 1800, ओके। नेक्स्ट, व्हाट आर दे टॉकिंग, यूजेस कहां पर आता है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यूजेस। इट इज यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल, आईआर ब्लास्टर करके बोलते हैं, फोन में लगा होता है, ठीक है। आईआर ब्लास्टर ऊपर में लगा होता है। आप इसी आईआर ब्लास्टर, इंफ्रारेड रेज ब्लास्टर के कारण ही यू कैन यूज योर फोन बाय इंस्टॉलिंग एन ऐप of remote control to switch on or switch off your TV and various functions in any electronic device which is having a receiver of that IR waves, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैसेस टू कीप द प्लैनेट वार्म। यस, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ा देता है, बट देयर इज सम और द अदर अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट रिक्वायर्ड टू कीप द प्लैनेट वार्म। अदरवाइज जितना हीट हमको सन से आके मिल रहा है वो पूरा एक बार टच होके रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा, तो इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर कीपिंग द और मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ अर्थ।
बट ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट एयर में बढ़ जा रहा है, एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज कॉल्ड एज द ग्रीन हाउस गैस बिकॉज इट फॉर्म्स एन एनवलप which reflects back the escaping heat back to the surface and increases the temperature. Haze photography, because infrared waves are less scattered than visible light, so atmospheric particle. IR कैमरा होता है रात में देखने के लिए, ठीक है, वो infrared lamps in treatments of muscular complaints, ओके, वो क्या बोलते हैं, जो मेरे हिसाब से सोनोग्राफी वगैरह भी होता है, उसमें आपका शॉर्टर वेवलेंथ यूज होता है, बट देयर आल्सो if there is a muscular sprain or something over there, it can be detected easily by the amount of heat generated from that part. So मेरे हिसाब से वहां पर ये infrared lamps वहां पर यूज होते होंगे. Reading the secret writings on the ancient vault. I don't know how it is done, so you can have a detailed view of it in any of the other videos by typing these letters over there. Secret writings on ancient walls by infrared waves. In knowing the molecular structure also it is used over there. Okay. नेक्स्ट आता है विजिबल लाइट. यही तो हमारे काम का लाइट है भाई. ओके. विजिबल रेंज कहां से कहां लाई करता है, वेवलेंथ जरा ध्यान से देख लेना. 8 इंटू 10 का पावर -7 से लेके 4 इंटू 10 का पावर -7 मीटर्स. ओके. वेवलेंथ बहुत कम हो गया बट फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है. 4 इंटू 10 का पावर 14 एंड 7 इंटू 10 का पावर 14 frequency. Hertz is the frequency. Radiated by excited atoms in the ionized gas. These ionized gas कहाँ पर होता है भैया? Any source of light which are having a bulb or tube light. Sun solar radiation also reduces light over there. क्या क्या phenomenon show करता है? Reflection, refraction, interference, diffraction, polarization, photoelectric effect, photographic action, sensation of sight. Everything we have already dealt in the 12th class only. Use provides us the information of the world. It is known as, it produces the sensation of vision in our eyes and can be cause chemical reaction. हाँ, वो सिल्वर और सिल्वर क्लोराइड वाला chemical reaction होता है भाई. photosynthesis is also a type of chemical reaction. It is carried out in the presence of light only, so this waves can carry out chemical reactions also. अब रेंज दिया हुआ देखो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन एक्सेट्रा. नेक्स्ट कम्स, अब क्या हो रहा है, अल्ट्रा शॉर्ट फ्रीक्वेंसी आ जा रही है. विजिबल रेंज से भी छोटी फ्रीक्वेंसी किसके अंदर आ जाती है? अल्ट्रा वायलेट लाइट ओवर देयर. व्हाट इज द विजिबल, व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव्स? लेट अस सी. वेवलेंथ ओवर हियर 3 into 10 का पावर 5 and 10 का पावर -7 मीटर्स. 1.5 into 10 का पावर -7 मीटर्स. वेवलेंथ और छोटी हो गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है. अल्ट्रा वायलेट रेस 10 to the power 16 hertz to 10 to the power 17 hertz. Very high frequency wave. Very high. Source: high voltage gas discharge tube, arc, iron and mercury and the sun. Written in 1800. इनका डिस्कवरी का सहरा इनके सर पर बनता है. फूड प्रिजर्वेशंस, वो आरओ और यूवी प्यूरिफायर आता है. मींस वो पैथोजेंस को किल अप कर देता है. ठीक है, आज हम कोरोना वायरस को मारने की बात भी करते हैं, तो यूवी रेडिएशंस के थ्रू भी उनको मारा जा सकता है, ये पता था. बट इफ इट एंटर्स होस्ट बॉडी, अगर वो किसी आदमी के शरीर में, तो उसके ऊपर हम यूवी रेज नहीं मार सकते, क्योंकि द यूवी रेज विल हैव सम अदर इफेक्ट ऑन द बॉडी ऑफ द बियरर. So if it is on a non materialistic non biotic substance, जैसे कि जो जीवित नहीं है, उसके ऊपर हम यूवी रेस को हिट करके we can cleanse that. ठीक है. In study of visible writings posed in the documents of fingerprints. अरे वो नोट वगैरह के अंदर भी यूवी रेस को अगर हम मारते हैं, तो there are certain engravings which get lighted up on the presence of UV light over there. फोर्ज फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह के लिए भी ये यूवी लाइट को हम यूज कर सकते हैं. हमको नेकेड आइज से वो दिखता नहीं है, बट फिंगरप्रिंट्स कैन बी टेस्टेड बाय सीइंग द अंडर द यूवी लाइट स्कैनर. ओके. स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एक्सेट्रा. Moving on, the last variety of electromagnetic spectrum over here is the wavelength having 100 angstroms to 0.1 angstrom. Angstrom means 10 का पावर -10 मीटर्स. वेवलेंथ काफी ज्यादा छोटा हो गया है और फ्रीक्वेंसी इवन मोर हायर, 10 का पावर 16
से अब ये क्या हो गया 10 का पावर 18 एंड 10 का पावर 20 हर्ट्ज. Very 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 high frequency. Where do we see that sudden deceleration of fast moving electrons by metal target? ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के टाइम पर भी देखता है. एमिशंस, अभी हम जब चैप्टर पढ़ेंगे एटम्स एंड न्यूक्लियाई, वहां पर वी विल सी द स्पेक्ट्रल एमिशन ऑफ दीज स्पॉन्टेनियस पार्टिकल्स. तो ये एक्सरेज क्या हो रहा है, फास्ट मूविंग डिसल्ट्रेशन ऑफ फास्ट इलेक्ट्रॉन्स बाय अ मेटल टारगेट. रॉन्टजेन इन 1895 ने इसके ऊपर डिस्कवर किया. कहाँ कहाँ पर काम आता है, क्या क्या शो करता है. इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट्स, आयनाइजेशन ऑफ गैस, fluorescence and many more energetic. It is more energetic than UV rays. Uses very important. इसका क्वेश्चन तो एनी हाउ डायरेक्टली आपके पेपर में एक आने का चांस है. What are the uses of X-rays in medical diagnosis? ये तो हमको पता है, fractured bones and all, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको पता भी है. In the study of crystal structure, because X-ray can be reflected and diffracted by crystals. क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए इसका मटेरियल का, ठीक है, कोई भी मेटल हो चाहे नॉन मेटेलिक मटेरियल हो. इन इंजीनियरिंग फॉर डिटेक्टिंग फॉल्ट्स, क्रैक्स, फ्लॉज, होल्स इन द फिनिश्ड मेटल प्रोडक्ट. 9th क्लास में हम लोग अल्ट्रासाउंड पढ़े थे. अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स अंडर मेटल, ठीक है, बाय यूज द detective departments to detect explosive, diamond, gold, etc. Radiotherapy to cure untraceable skin diseases. This is a very important application. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, किस टाइप की डिजीज को ट्रीट करने में काम आता है. रेडियोथेरेपी टू क्योर अनट्रेसेबल स्किन डिजीज एंड मेलेगेंट ग्रोथ्स. वो अल्सर वगैरह को डिटेक्ट कर लेता है ना, ये हमको एक्सरे में दिखाई देता है. तो भाई एक्सरे से we detect many things under the skin which is not visible from outside. Now comes gamma rays. Up even higher frequency you are having over there, even higher frequency और wavelength कैसा हो गया और छोटा, 10 का पावर माइनस 14, 10 का पावर माइनस 14 to 10 का पावर माइनस 10 meters. Frequency being 10 का पावर 18 hertz to 10 का पावर 22 hertz. Even more. रेडियो एक्टिव डीके, अल्फा बीटा गामा डीके के टाइम पर हमको ये देखने मिलता है. हेनरी बैक्यूरेल 1896 डिस्कवर्ड द गामा रेस. फोटोग्राफिक प्लेट, फ्लोरेसेंस, आयनाइजेशन, डिफ्रैक्शन, हाई पेनिट्रेशन पावर. ये जो पेनिट्रेशन का मतलब टू पास थ्रू अ मटेरियल. तो कुछ वेव्स होती हैं जो दीवार के आर पार जा सकती है, कुछ वेव्स होती हैं जो मेटल शीट के आर पार भी जा सकती है, कुछ तो ऐसे करके वेरी लो पेनिट्रेशन पावर हमको किसमें मिलता है, एल्यूमिनियम, वेरी वी कैन से रिफ्लेक्टेंट टू दिस टाइप ऑफ वेव्स, मतलब किसी को पास होने नहीं देता है. तो पेनिट्रेटिंग पावर इज टिल व्हाट एक्सटेंट ए रे कैन पेनिट्रेट एंड पास थ्रू ए पर्टिकुलर मटेरियल, वो उसकी पेनिट्रेशन पावर कहलाती है. And last but not the least, use of gamma rays. Again, this has a very important application. इसके ऊपर क्वेश्चन बनने का बहुत ज्यादा चांस है. रेडियोथेरेपी, ट्रीटमेंट ऑफ मेलियन एंड ट्यूमर्स, ट्यूमर्स के ट्रीटमेंट में काम आता है रेज. मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन, इथाइलिन टू इनिशिएट सम न्यूक्लियर रिएक्शन. गामा रेज को न्यूक्लियर रिएक्शन इनिशिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं. टू प्रिजर्व फूड स्टफ्स फॉर लॉन्गर टाइम बिकॉज सॉफ्ट एक्स रेज कैन किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फूड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बट उसको अगर हम किल कर देते हैं तो द चांसेस ऑफ द फूड गेटिंग स्पॉइल्ड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज रिड्यूस्ड. बट द यूज ऑफ दीज गामा रेज इज आल्सो वेरी should have to be carried out under very controlled and abled, we can say, environment, because इनका कुछ टाइम होता है कि इतने लिमिट के बाद ये रेज भी वहां से चली जाएंगी, तो उसके बाद ही उसको कंज्यूम करना, उसको यूज करने के टाइम पर भी, बिकॉज these rays if directly incident on our skin can also damage our skin and cause many other problems, cancer and all. टू स्टडी द, जैसे बोलते हैं ना एक्सरे रूम है या जहां पर हमारा वो होता है सीटी स्कैन, ये सब जगह पर यू आर नॉट अलाउड टू गो विदाउट द प्रॉपर गियर. गियर मतलब वो जो कपड़ा उसको एब्जॉर्ब करता है उसके लिए. टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई इज अनदर एप्लीकेशन फॉर गामा रेज.
ये हुआ. Yes, to summarize all the points that we have just discussed in a periodic table, in a periodic arrangement. So here is the arrangement given to you in the increasing order of frequency and decreasing order of wavelength. Radio, micro, infra, visible and ultra UV. Okay. Frequency range given over here for radio this manner. और क्या क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ भी दिया है, प्रोडक्शन, डिटेक्शन एंड मेन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस. ओके, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पर वो आपका जो रीजन से टिक करना है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ and main property and uses. These are the three columns which you need to memorize for each type of waves. Okay, it is tabulated in a tabular manner. Can have a note of this. Coming to X-ray and even smaller than that, gamma rays. So with this we come to an end of electromagnetic spectrum chapter for academic year 2021-22, EM waves, EMW. Okay, so next we will be starting with the next chapter. I suppose it is atom in your syllabus, atoms.